We are going to start. Okay, now I'm completely fine. And the last topic that we discussed in our classes was partition of Bengal, Swadesi movement, anti-partition of Bengal movement, right? And we also discussed the reasons for the Surat split. Clear? So a few areas we have already covered. Now the main topic that we are going to start today is Home Rule League movement. That is the main topic, right? Home Rule League movement, and that is one of the most important topic here in your modern Indian history syllabus. Home Rule League movement, right? And the time period of this Home Rule League movement is from 1916 to 1918. This is the time period of Home Rule League movement. So before I start Home Rule League movement, let's connect this topic to background. That what was the background? This we need to understand. Clear? Background. So if you understand the background of this topic, you can easily understand the sense of this topic. So what is the background? So in the background, the first event that I am going to take is Surat split. Surat split. This is an important event in the background, and the year of this Surat split is 1907. After Surat split, what will happen? You all know. Okay, when the split of moderates and extremists will take place. Okay, this will make Indian National Congress weaker. Why weaker? Because the extremist group, okay, the leaders were more popular among the rural masses, or you can say that they were getting the popular support of the masses. So this split indicates that INC, okay, now was gradually becoming weaker day by day. Okay, it was becoming weaker day by day. This is very simple. Weaker day by day, because the unity was broken. Here unity was broken. Unity of Hindus and unity of moderates and extremists was broken. This is one point. Now the second important point. What happened? The second important event in the background is the changes that were introduced by this Act of 1909. This is also known as what? Mobilisation reforms. I've already discussed this topic with you. Mobilisation reforms. And one point that I discussed in mobilisation reforms, that is also known as the teeth of communal dragon, was what? SES for Muslim. Okay, so that was like the teeth of communal dragon. You all know this, that SES for Muslims. Okay, 1906 formation of Muslim League, and Muslim League was claiming itself to be a party, okay, of Muslims, okay, claiming to protect the rights of the Muslim minorities in India. So this SES for Muslims, this is basically, okay, you can say that this will become a reason, that is a bone of contention. हम INC के लिए नहीं कह सकते, but still, okay, this issue will create a rift between Hindus and Muslims. This will create a gap between Hindus and Muslims. Muslim League will make efforts to create doubt and suspicion in the minds of the Muslim masses regarding the role of Indian National Congress. Muslim League will start saying that Indian National Congress is a party of Hindus. So that is the, you can say that, propaganda used by Muslim League. And this was also making Indian National Congress weaker. This was also making Indian National Congress weaker. ये भी Indian National Congress को weaker बना रहा था. This all was happening. Got it? Now INC was getting weaker. British policy was successful. British policy of divide and rule was now successful here. The British policy of divide and rule was successful here. After Surat split, British used the policy of carrot and stick. And what is carrot here? The carrot is mobilisation reforms. And what is stick? Policy of stick. So brutal suppression of
brutal suppression of extremist leaders, brutal suppression of extremist leaders, and this made Indian National Congress weaker. So when Indian National Congress will become weaker, its popularity will start declining. Then at this time, what is needed? Introspection is required or needed. कि क्या कमी रह गई है? So obviously the people will say that unity must be maintained at any cost. Clear? So the moderates also realized their mistakes, and extremists also realized their mistake. Because I have told you earlier that the moderates and extremists were like, moderates are like the brain or mind of Indian national movement, and extremists are like heart, and both are needed. That was the emotionally charged nationalism. So this was happening. Now both realize their mistake. Now as a result, what will happen? 1907 was the year of a split, and 1916 a session will be held in Lucknow, that is also known as Lucknow session. Okay, session will be held in Lucknow, and in this Lucknow session, what will happen? Okay, Lucknow Pact. This is an important development. Lucknow Pact. Lucknow Pact. Clear? And this pact means what? So it has two meanings here. This pact has two meanings here. This Lucknow Pact has two meanings. What are the two meanings? Meaning number one and meaning number two. This we need to understand. That what are the two meanings of Lucknow Pact? So one meaning is, okay, reunion. Reunion of moderates and extremists. That's why this is called pact. So this is one meaning. A reunion of moderates and extremists, both will come together, and Annie Besant will play an important role in this process. Tilak will also play an important role, but Annie Besant role is more important. Annie Besant I have discussed with you earlier. Theosophical Society. Was she founder of Theosophical Society? No. She was associated with Theosophical Society. She made it popular. Now tell me one thing. Which leaders will be closely connected with Annie Besant? The leaders of South India. Okay, so when I will discuss Home Rule League of Annie Besant, okay, you can make a guess also that the center of activities of Theosophical Society was Madras. Clear? And now Annie Besant has played a very important role in bringing together moderates and extremists, and this will make Annie Besant popular in Indian National Congress. Also, now moderates and extremist union was possible. Now, how the union is possible? What was the moderates definition of Swaraj and what was the extremist definition of Swaraj? Kya tha definition? You all know. Moderate definition of Swaraj was what? Self-government by Indians under the British rule. And initially during Swadeshi movement, what was the extremist definition? Self-government by Indians. We don't need British rule. We don't need guidance, support and help of British. Now, officially, what is the meaning of Swaraj in the year 1916? Officially, what is the meaning of Swaraj? Can you make guess? Guess करो. Official meaning क्या है स्वराज का? Exactly. Moderate meaning is the official meaning. So pact means what? Extremists will have to accept that meaning or not? Yes. ठीक है. Pact तो तभी होगा ना. एक कॉमन एजेंडा, कॉमन प्रोग्राम के साथ आप बढ़ोगे, तभी वो पैक्ट होगा. Okay. This is the one most important thing. So here what will happen? Which meaning? It means that now extremists rejoined Indian National Congress, and now the official meaning of Swaraj will be accepted. ठीक है? That is what? Self-government within British rule. Self-government within British rule, and extremists now realized that, okay, we have to fight with the moderate methods. That is a more effective strategy. The extremist politics realized it, that the moderate politics is a more effective strategy. क्यों realize किया? Now many people criticize moderate strategy, but here what has happened? After Surat split, British government has used what? Brutal suppression. और suppress करके क्या किया? आपके पूरे के पूरे मूवमेंट को ही रोक दिया.
then they realized that why negotiations are important. ठीक है, अगर ऑफिशियल सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, तो आप मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आपको ग्राउंड में रहना होगा अगर आप लड़ना चाहते हो तो. ठीक है ना. तो दिस दे रियलाइज्ड. नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट? INC realized that Muslim League is continuously making attacks on Indian National Congress. Muslim League is trying to prove that Indian National Congress is a party of Hindus. And how Muslim League is becoming successful in convincing the Muslim masses. हालांकि सभी मुस्लिम masses को convince नहीं कर पाए थे मुस्लिम लीग. It was not very much successful, but a little bit successful. ठीक है ना? On the issue of SES for the Muslims. ठीक है? Because Muslim League is saying yes, Muslims want SES for the Muslims, and INC was saying no, at any cost we are not going to approve this SES for the Muslims. और जैसे ही INC ये बात कहती थी कि we are not going to approve SES for the Muslims, so Muslim League, okay, will use it as an opportunity to create distrust in the minds of Muslims. कि देखो अगर Muslims का भला चाहते तो SES for Muslims वाले issue को reject क्यों करते? If INC is rejecting this issue of SES for the Muslims, it means that INC, okay, is not committed to protect the rights of Muslim minorities in India. So this propaganda was promoted. INC को इससे भी निपटना था. So what INC did? Okay, INC did what? पहले इसके लिए लखनऊ पैक्ट took place. Before this a meeting took place in Taj Hotel, मुंबई, जो मैंने बताया भी था टाटा वाली वीडियो में. ठीक है ना, कि 1916 के लिए फेब में पहले एक मीटिंग हुई जिसमें मुस्लिम लीग एंड INC लीडर्स मेट एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग. एंड फाइनली in this session, INC was ready to give temporary acceptance of the idea of SES for the Muslims. Temporary acceptance, not permanent acceptance. What I am using? The word which I am using is the temporary acceptance. So write this point. Okay. Second point, this is also a pact between INC and Muslim League. This is also a pact between INC and Muslim League, and here INC was ready to give, okay, temporary acceptance to the idea of SES for Muslims. Temporary acceptance to the idea of SES for the Muslims. So this is an important question. 1916 tak Indian National Congress was saying no. 1916, what was the stand of Indian National Congress? Temporary acceptance, right? And this was one of the biggest mistake done by Indian National Congress in the history of Indian Nation movement. Okay, because this is considered to be a part of appeasement politics, and this appeasement will never come to an end. ठीक है, एक पहली बार अगर आपके घर आपका छोटा भाई बहन है और वो रोता है कि मुझे खिलौना चाहिए, और अगर आपने रोने पे दिला दिया तो वो समझ जाएगा कि बेटा अगली बार कुछ भी चाहिए तो मुझे यही वाला ट्रिक यूज करना है और जोर से रोना है. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो अपीज मत करो. जब वो रोए तब मत दिलाओ, जब वो शांत रहे तब ले जाके दिलाओ उसको. मुस्लिम लीग के साथ यही होने वाला है. ओके, सो राइट दिस पॉइंट. ओके, this was one of the biggest mistake committed by INC in. This was one of the biggest mistake committed. Why I am saying biggest mistake? Because it is appeasement policy. Even some Muslim leaders of INC came and opposed it. उन्होंने कहा ऐसा मत करो. ठीक है, when I am saying Muslims, we are not universalizing. ठीक है, Muslim League अभी बहुत successful नहीं है. Many Muslims in Indian National Congress were opposing Muslim League and the propaganda that was promoted by the Muslim League. ठीक है ना? So have you written temporary acceptance? Now we will relate one more fact, क्योंकि कनेक्ट करके बढ़े. सीधा होम रूल लीग बता सकता था मैं, बट वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाओगे. फिर दूसरी चीज देखो, आगे बताऊंगा इस टॉपिक को. 1928 में आएगा नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, और 1916 से 1928 तक व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? Temporary acceptance to the idea of SES for the Muslims. But what will be the stand of INC in Nehru Report 1928? Nehru Report will reject SES. 1920 में क्या कर देगी? Reject कर देगी. तो यहाँ पे just note कर लीजिए इसको. This is very important. जैसे 1916 to ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. 1928 और यहाँ पे लिख लेना 1909.
09, ठीक है ना। और यहाँ पे इशू क्या है, SCS फॉर मुस्लिम्स। ओके, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ड्रॉ दिस स्केच. These sketches help us to retain the facts and informations, okay, better. Okay, so that is Indian National Congress. So rejection of SCS, rejection of SCS for Muslims. मैं जब बीमार उमार होता हूँ ना 2-4 दिन के लिए, कभी वैसे जल्दी बीमार होता नहीं, इन 5 और 6 मंथ, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे महान लोग हैं जिनके वीडियोस मैं देखता हूँ, और एक चीज मैं नोटिस करता हूं कि पूरा का पूरा जो एक वीडियोस के पीछे एक प्रोपेगेंडा होता है, वो क्या होता है, स्टूडेंट्स को डराना। मेरी बात समझ गया ना? पूरी वीडियो देखने के बाद डर जाओगे कि यूपीएससी कितनी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही है, वर्टिकल्स पता नहीं क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मत डरो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी थोड़ा सा भी अवेयर है ना स्टूडेंट, तो खुद ही पढ़ जाएगा। गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बार बार कहता हूं कि उस तरह के जो वीडियोस हैं जिसमें सामने वाला टीचर आता है कि मैं 30 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है और जो मैं बोल रहा हूँ वो ब्रह्म वाक्य है, ये सुन के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। वही डर खेल खराब करेगा। मेरी बात समझ गया ना? हम मोटिवेट नहीं होते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू फियर फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। और मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ किसी का, 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सबका थोड़ी ना हो जाएगा एक साथ। बताओ सीट्स कितनी आती हैं फाइनल? मान लो 800 सीट्स हैं, तो सब थोड़ी ना सिलेक्ट हो जाओगे एक साथ। 1-2 बार अटेम्प्ट ठीक है, नहीं हुआ, कोई प्रीलिम्स में फेल कर गया, मेंस में फेल कर गया, तो फिर अपनी वीकनेसेस को पहचानो और काम करो, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, ऑल दिस यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स। आपको चैट जीपीटी यूज करना है वो भी यूज करो, गूगल से पढ़ना है वो भी यूज करो, कहीं कुछ गलत नहीं दिया रहता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, हर जगह होती है, हो सकता है एज ए टीचर पढ़ाते हुए मैं भी कुछ गलतियां कर दूं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा अपने कंटेंट को बहुत क्रूशियल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझना है और आंसर राइटिंग करना है, दिस मच इज रिक्वायर्ड। ओके, तो जैसे ये स्केच आपने ड्रॉ किया, आईएनसी का स्टैंड क्या है, रिजेक्शन ऑफ एससीएस फॉर मुस्लिम्स, क्लियरली। नाउ 1916 to 1928, राइट दिस एससीएस पे स्टैंड क्या है, SCS for Muslims, right? This temporary acceptance of SAS for Muslims, temporary acceptance of SCS for the Muslims, ठीक है, temporary acceptance. Now the next point, 1928. 1928 में what is given, Nehru report. Nehru report, this I will discuss later in detail. इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यू कैन राइट हियर नेहरू रिपोर्ट में, राइट, rejection of SCS for Muslims। इसके बाद INC का स्टैंड क्या हो गया, रिजेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट यू गिव टेम्पररी एक्सेप्टेंस, देन यू रिजेक्ट इट, सो दिस प्लान विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट दिस इज कंसीडर्ड टू बी द 1916 considered to be the part of policy of appeasement, and that's why, okay, we see that Muslim League demands, okay, communal demands will keep on increasing, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अपीज करना बड़ा मुश्किल है मुस्लिम लीग को, दिस विल हैपन, गॉट इट। नाउ इन दिस लखनऊ सेशन, गांधी केम टू इंडिया, रिटर्न बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर, पता है आपको कौन सा ईयर था, 1915। तो 1916 गांधी लखनऊ सेशन में को अटेंड किया था कि नहीं गांधी ने, द आंसर इज यस, ठीक है, बट ही वाज द बैक बेंचर, ठीक है। हमेशा बैक बेंचर गांधी बनता है, बड़े लोग बनते हैं, बैक बेंचर्स को बहुत लाइटली नहीं लेना है। सो गांधी गांधी वाज बैक बेंचर, इट मींस दैट ही नीदर फेवर्ड or supported moderates, neither he favored or supported extremists, okay, he remained silent and he was absorbing the entire political situation, ठीक है। गांधी की पॉलिसी क्या थी, फर्स्ट ऑब्जॉर्ब देन रिएक्ट। और जब गांधी 1916 के सेशन में चुपचाप बैठे हुए थे, उस समय जिन्ना वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर, एनी बेसेंट वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर, ठीक है, बट गांधी वाज नॉट दैट मच पॉपुलर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। So 1916 was the year. Have you got this idea? Okay. Now one background, one part is clear.
Now I am coming to the second part, and what is that? What we see is that between this period, again I am coming to 1907, 1909. You know that why these years are important. Between these years, what we see is that an international event took place, and that international event is known as World War One. ठीक है? And what is the year of World War One? 1914 to 1918. That was the year of World War. And here what we see that two group of nations came into conflict with each other. And these two group of nations are, one is, okay, Germany, Italy, Austria-Hungary. Italy later changed the side, okay. And the second group was Italy will change the side, and the second group is Britain, France, Russia, and lastly, this group was supported by US. So this was the equation. Okay, plus there were many other countries also. Okay, many other countries. These were the most important countries. There were many other countries also. For example, Turkey will join this side. Turkey will join this side. खिलाफत कैलिफेट मूवमेंट में बताऊंगा आपको. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट स्टिल दिस वॉर इज नेम्ड एज वर्ल्ड वॉर. नाम क्या दे दिया? वर्ल्ड वॉर को. वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया, है ना. And British announced that, okay, colonies are also supporting us in this First World War. ये वही टाइम था जब Indian industries got an opportunity, okay, the Indian capitalists got an opportunity to grow. ये भी मैंने टाटा की वीडियोस में डिटेल से बताया था. ये वही टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टाइम था. गॉट इट? 1914 to 18. अब इस पूरे के पूरे टाइम फेज में obvious critics will write many articles that why you are saying it world war. वर्ल्ड वॉर क्यों कह रहे हो? लड़ रहे हो तुम लोग और नाम क्या दे रहे हो? वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर मत कहो इसको. तो इस पे भी बहुत सारे डिबेट्स हैं कि द यूज ऑफ दिस वर्ड वर्ल्ड वॉर इज जस्टिफाइड और नॉट. बट स्टिल ब्रिटिश हैज द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन यूज, ओके, मेन, मनी एंड मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज. ठीक है, सो ब्रिटिश वर एक्सपेक्टिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द colonies at this time. British were expecting what? British were expecting help and support from the colonies. They were expecting help and support from the colonies. Which kind of help and support they were expecting? So the answer is 3M. And what is this 3M? 3M is very simple. This is men, this is money and material. Men, money and material. Clear? Men means what? Young men who will come and support Britain, okay, as soldiers. Money means what? Gandhi. What was the Gandhi's idea? Gandhi always supported. For example, when Gandhi was in South Africa, so there was a Boer War. गांधी वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे 1819 to 1902. And Gandhi asked Indian people in South Africa, right, that we should support British. When British are in difficult situation, what we should do? We should support British people. The same he is asking Indian people also. Gandhi was in India 1915 onwards. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started 1914. It was a prolonged war. 1918 तक कंटिन्यू रहा. Now what Gandhi did? Gandhi volunteered for the support of British people. Gandhi will also start collecting funds. Funds means what? Money. To give it to British people to fight First World War. Gandhi will also ask the Indian youth to join the army. And we all know that Gandhi had very good relation with the capitalist class in India. ये भी मैंने टाटा वाली वीडियो में बताया था, कैपिटलिस्ट क्लास विद इंडिया. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस कैपिटलिस्ट क्लास, ओके, will get the opportunity because we see that the war will do what? It will disrupt trade and commerce. So the regular supply of goods and materials from Britain will stop. Okay, so our domestic demands can be fulfilled, okay, with the domestic supply only. So this will give the Indian capitalists an opportunity to grow. And in this way, the Indian capitalists, for example, Tisco can provide iron and steel to Britain at the time of war. Okay, for example, Britain was having some of the most important contracts to provide iron and steel, and those contracts were rejected during the time of war. So Tisco will get those contracts. So you will get the opportunity to grow. And Britain will also realize कि इंडिया में अगर कुछ इंडस्ट्रीज चलती रही तो मजबूरी में हमारे काम आ भी सकती हैं. So after First World War,
वो उतना सप्रेस करने का थोड़ा सा अप्रोच चेंज होगा. ओके, सो दिस इज द इंटायर सिचुएशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इन प्रोग्रेस, एंड दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विल इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पीपल और नॉट? होगा कि नहीं? यस, दैट इज, write this, war crisis. I am using a word, war crisis. Okay, what are the reflections of this war crisis? War crisis के क्या क्या reflections हो सकते हैं, बताओ. क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन होगा ना. ओके, सप्लाई चेन विल बी डिस्टर्ब्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स विल बी डिसरप्टेड, गॉट इट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेनी अदर इश्यूज यू कैन रिलेट हियर. ओके, तो इसमें डिसरप्शन तो होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. So first world war will create challenge before Indian people also. So Indian people were already dissatisfied. Why they were dissatisfied? They were already dissatisfied. And the first world war, the Indian masses were already dissatisfied. Indian masses were already dissatisfied. Why they were dissatisfied already? You all know the reason. 1858 में क्या हुआ था? Crown rule. Crown rule in India. And the people expected what? क्वीन विक्टोरिया ने क्या कहा था? इंडियन सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड लाइक ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. ऐसा हुआ क्या? नो. डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन पीपल कंटिन्यूड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड. एंड व्हाट हैपेंड? दिस इज व्हाट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, 1914 to 1918 period. Okay, and this phase is what? Again, this phase is the phase of economic exploitation of India under British rule. यहाँ पे वैसा नहीं. This entire British rule in India is what? Un-British in nature. ये जैसा क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 जो प्रोक्लेम किया था वैसा नहीं है. This rule is what? Un-British in nature. Okay, so this is the entire topic. Indian masses, they were highly dissatisfied. And what about British government? British government, was it serious towards the political demands that were raised by Indian National Congress? No. British government was not giving serious attention to the demands made by our national party, that is Indian National Congress. Okay, they were not very sensitive towards our demand, and this was also another reason for the dissatisfaction. Now I hope you can understand this. Okay, you can also write that the British government was also not attentive or sensitive to listen to Indian demands. To listen to Indian demands. That's why the people were dissatisfied. And First World War will add fuel to the fire. It will add fuel to the fire. It will add fuel to the fire. How it will add fuel to the fire? So war crisis. People will start facing difficulties. And they will say that सब अंग्रेजों की वजह से हो रहा है. मेरी बात समझ गया ना? सब अंग्रेजों की वजह से हो रहा है. People start facing difficulties and they will just say that this all is the result of British presence in India. It means anti-British sentiments will be more consolidated during the war time, during the war crisis effects. So you can say that during this period, anti-British sentiments were more consolidated. During this period, anti-British sentiments were more consolidated. यहाँ पे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ज्यादा कॉन्सोलिडेट है. और क्या कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं. एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स आर कॉन्सोलिडेटिंग एंड देयर इज नो मूवमेंट. लोगों का गुस्सा आ रहा है अंग्रेजों पे, देयर इज नो मूवमेंट. ये वही टाइम होता है, ठीक है, जब मूवमेंट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए. ठीक है, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स वर कॉन्सोलिडेटिंग. ठीक है, इतिहास में आप अमर हो जाते हैं, लोग आपको जानते हैं, उसके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? टाइमिंग बहुत जरूरी है, किस समय आप कहाँ हैं. दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? देखो, दिस इज वन पार्ट. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या है? देखो, दिस वॉर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर 1914 to 1918 एंड हियर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इसको इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था, वी ऑल नो दिस. एंड हियर जर्मनी, राइट, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर. ओके, ये साथ साथ लड़ रहे हैं. नाउ वॉर में किसका पलड़ा भारी हो रहा था? दिस पार्ट. ठीक है, जर्मन्स, दे वर मोर पावरफुल. And at many occasions, okay,
This coalition was suffering defeats. Now at this point of time, they need help and support. इनको क्या चाहिए? Help and support. Now देखो अब यहाँ पे important points क्या है? There are two important points. Here Russia will quit First World War in 1917. Russia quits First World War. We all know this. रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, राइट? और रशिया में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, दैट इज रशियन रिवॉल्यूशन, क्लियर? एंड socialism, okay, which was a, you can say that, emerging idea at that time, okay, this idea got a practical shape, implementation into the political system, and socialism was saying what? No to imperialism and no to colonialism. रशिया में सोशलिज्म है और सोशलिज्म का साफ साफ कहना था नो टू इंपेरियलिज्म एंड नो टू कॉलोनियलिज्म. और इंडिया में क्या था? गॉट इट? ओके. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट. रशिया तो निकल लिया, ठीक है, दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट. हु विल गिव देम हेल्प एंड सपोर्ट? यूएस. यूएस वाज प्रीवियसली अ ब्रिटिश कॉलोनी. यूएस पहले से ही क्या रहा था? ब्रिटिश कॉलोनी. यू आर नो दिस. यूएस वाज प्रीवियसली अ ब्रिटिश कॉलोनी and US was the first British colony which was successful in getting independence in the year 1776. ठीक है? And from that time onwards, what was the outlook of US? US का outlook क्या था? जो पहले खुद ही कॉलोनी रहा हो, so it will always oppose what? Colonialism, imperialism. और US को आजाद हुए कितना समय हो गया? 1775. So I was saying that US, right? US was the first colony, British colony that gets independent. So from that time onwards, what we see that US was having a very strict policy, and that was what? No to imperialism and no to colonialism. But during this course of time, industrialization in US took place, and now US was a industrial country also. Okay, when we are talking during this period, so during this period, now US was a major industrial power also. So a major industrial power needs what? It needs new market to do trade and commerce. But the markets were preoccupied because of colonialism. For example, India was a colony of Britain, so the market of India was preoccupied. So what will be the US stand? If we look at its history also, it will say no to imperialism, no to colonialism. Now it was also in the economic interest of US to oppose what? Colonialism. Now Britain needs help and support. Okay. And in US, when we look at the demography, population of US, majority of the people were of British origin people. So they were also mounting pressure on the government that the government should support Britain. Got it? In this situation, US will put one condition. Or when a policy comes into effect, obviously there are a lot of discussions at that time. Okay. So there was a lot of discourse going on at that time, and US was saying that, okay, if the countries like Britain and France will become ready to give right to self determination for the people living in the colonies, I will come in the support of these countries of Europe. If they will get ready to give right to self determination for the people who are living in the colonies. It means in popular discourse, okay, the US was saying what? That the countries like Britain and France should give right to self determination to the people who are living in these colonies. ये साफ साफ कह रहा था US. Got it? Plus, there was a minority issue also. Okay, in world history we have discussed that how the rights of minorities were not respected, they were not granted. Okay, and that was also one reason, okay, for the world war, for the outbreak of world war, how minority rights were compromised in Europe. Okay, growth of nationalism and minority issues, this all we know. Now in this entire situation, what is happening? Okay, those people who are enlightened people in India, the leaders who are educated, who are familiar with the national and international political developments, they will realize that this is exactly the time when we can launch a movement in India. This is World War First period.
And in World War First period, Britain is already engaged in war, already engaged in First World War. Second point, the nationalist sentiments are consolidated. The nationalist sentiments are consolidated. And the third point, the international community, especially US, is favoring or supporting, US is favoring or supporting for the right to self determination. So this is the right time that we should launch a movement. Clear? They thought that this is the right time that we should launch a movement. Now, which kind of movement should be launched? Yes. No, no, right to self. You is this issue, right to self determination. It sim it simply means what? That the people of colonies, okay, should be given the right to, okay, right to self determination about their administration. वो अपना administration खुद देखें, right? They should take economic decisions by themselves. ठीक है? This is like that. Here, US is not saying, okay, Second World War के बाद decolonization की बात होगी, but here US is saying right to self determination. ठीक है ना? That is an important point. Okay. Now, at this point of time, some leaders will realize the need to start a movement, the need to start a movement. Okay, so which kind of movement should be started? Now, this is the another important, okay, you can say that idea to be decided. The movement कौन सा? तो देखो 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ सेशन. 1916 is famous for what? लखनऊ सेशन. एंड 1916 में एक और काम हुआ है, दैट इज व्हाट? मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन प्लस नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ओके, बोथ ऑफ देम आर रेडी ऑन दिस इशू ऑफ एससीएस. यहाँ पे आईएनसी का क्या है? टेम्पररी एक्सेप्टेंस. तो द लेवल ऑफ यूनिटी इज समवट मोर. So at this point of time, two leaders will come forward and they will say that we want to launch a movement. Okay, basically two parallel movements by the same name were launched. Okay, and the name of this movement will be Home Rule League Movement. Read this. Home Rule League Movement will be launched. Home Rule League Movement will be launched. The time period will be 1916, 1918. Now you can relate here. It is during First World War period. 1916 के सेशन से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं. ओके, 1916 1918 पीरियड. नाउ व्हाट इज द बेसिक पर्पस हियर? नाम ही इसका क्या है? द नेम इटसेल्फ इज होम रूल लीग मूवमेंट. होम रूल मींस व्हाट? गिविंग recognition to the idea of right to self determination about Indian people. यही तो है home rule. So read this. Here home rule indicates what? Write some points, then I will discuss. Right. Here home rule indicates, here home rule indicates the idea to give recognition to the idea to give recognition, the idea to give recognition to the rights of self determination of Indian people. The idea to give recognition to the rights of self determination to the Indian people. So it is in sync with the international political demands. This is also called the idea of self rule. इसको और क्या कहते हैं? The idea of self rule, right? This is also called the idea of home rule, or this is also called the idea of Swaraj. Self rule, home rule, or Swaraj. Now, which meaning of Swaraj? Moderate meaning or extremist meaning? So the answer is moderate meaning of Swaraj. Clear? ये है moderate meaning of Swaraj. देखो, there are two HRL movements. The founder of one HRL movement is Besant, and the second HRL movement was founded by Tilak. इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा. But here I want to discuss a very important point here. There were two parallel movements by the name of HRL. Okay, one is called HRL1 and the second is called HRL2. Home Rule League Movement 2.
So these are two parallel movements. One is called HRL1 and the second is called HRL2. Write this. HRL1 was founded in April 1916. ठीक है, आप मंथ्स नहीं याद रखोगे, सिंपली याद रखना पहले तिलक वाली बनी थी, देन एनी बेसेंट वाली बनी थी, राइट? एंड द सेकंड इज HRL2 एंड द मंथ इज सितंबर 1960. इसका मंथ क्या हो गया? सितंबर 1960. पहले का मंथ है अप्रैल 1960, second is what? September 1916. This HRL was founded by Tilak. Tilak was the founder of this HRL. And this HRL, the founder was Annie Besant. Annie Besant was the founder. Okay? Annie Besant was the founder of this HRL. Got it? It means two parallel movements by the same name. One founder is Tilak and the second founder is what? Okay? Annie Besant. Now, right here, important leaders, prominent leaders in HRL1, prominent leaders or associates. Therefore, it is very difficult to bifurcate these two, but still, those who are the important associates of Tilak, we will write here, and those who are important associates of, right, Besant, we will write here. So, right here, some important names, okay, right, Joseph Baptista. ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना. Why I am saying? I have already told you that UPSC will do what? They will select important topics that has already been asked in UPSC and they will try to find unexplored facts, those information that has still not been asked. Got it? And you will find that HRL movement has been asked multiple times. Okay? So we should know the name of prominent leaders also. Write this Joseph Baptista. Right? जोसेफ बैप्टिस्टा का नाम हमेशा याद रखना. ही वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएट ऑफ तिलक. ठीक है, तिलक के साथ काफी क्लोजली जुड़ के इन्होंने काम किया. द सेकंड इंपॉर्टेंट नेम, राइट दिस, एनसी केलकर. एनसी केलकर. एनसी केलकर. ओके. जीएस खरपड़े. गणेश श्री कृष्णा खरपड़े. जीएस खरपड़े. जीएस खरपड़े is another name. Okay, GS Karpade. Okay, now the next name is after GS Karpade. देखो एनी बेसेंट ऑब्वियसली सी विल बी एन इंपॉर्टेंट एसोसिएट, बट उन्होंने अपना दूसरा ब्रांच ही खोल लिया है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. लाला लाजपत राय, यस, दिस नेम विल बी इंक्लूडेड. लाला लाजपत राय. ठीक है. आर एस मुधोलकर. आर एस मुधोलकर. आर एस मुधोलकर एंड एस एस भागवत. एस एस भागवत. एस एस भागवत. नाउ इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट नेम्स कौन सा हाईलाइट कर लो? जोसेफ बैप्टिस्टा, केलकर, खरपड़े और लाला लाजपत राय तो याद करने की जरूरत है ही नहीं. तिलक के साथ लाला लाजपत राय रहेंगे. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट हियर, Annie Besant Home Rule League. Important names, prominent associates. Write this. Prominent associates. Prominent associates कौन थे? Who were the prominent associates? Like, right? BP Wadia. BP Wadia. BP Wadia. Right? Second is George Arundel. और जॉर्ज अरुंडेल का नाम जो है ना, ये हाईलाइट कर लेना. बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, these are the important names. वहां जोसेफ बैप्टिस्टा is the important name. ये नेम हाईलाइट करना. जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया is important name. Okay, सीपी रामास्वामी अय्यर. The third name is सीपी रामास्वामी अय्यर. सीपी रामास्वामी अय्यर. सीपी रामास्वामी अय्यर. Okay. Next name is GS अरुंडेल. जॉर्ज अरुंडेल के भाई थे जीएस अरुंडेल. ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जीएस अरुंडेल. अरुंडेल तो आप ये वर्ड याद रख लो. अरुंडेल, जीएस अरुंडेल एंड जॉर्ज अरुंडेल दोनों थे. राइट. एस सुब्रमण्यम अय्यर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम इज एस सुब्रमण्यम अय्यर. एस सुब्रमण्यम अय्यर. ठीक है, अब देखो सीपी रामास्वामी अय्यर कौन थे? ही वॉज द दीवान ऑफ त्रावणकोर रियासत. त्रावणकोर फिर चले जाओ साउथ इंडिया में. गॉट इट? जे सुब्रमण्यम अय्यर, इंपॉर्टेंट लॉयर, साउथ इंडिया.
ये भी साउथ इंडिया आ गए। एस सुब्रमण्यम अय्यर साउथ इंडिया, जीएस अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल साउथ इंडिया, बीपी वाडिया is an important name, was very much active in the theosophical society movement also. तो आपने एक बात ये समझ ली कि एनी बेसेंट मेड थियोसॉफिकल सोसाइटी पॉपुलर. The center of theosophist activity is what? Madras, South India, and here those leaders who are associated with any Besant are the most important leaders from South India. तो गेस भी कर सकते ना, इसको आप कर सकते हो ना. ओके अब देखो दिस विच वाज द फर्स्ट लीग. द तिलक्स लीग वाज द फर्स्ट लीग, HRL1 वाज द फर्स्ट लीग. ओके अब इसको देखो, द there were two parallel movements by the same name but they were covering different areas. So second point is right, they were covering different areas, they were covering different areas. This point will not be asked in exam, so for just a general information I am giving you, they were covering different areas. Okay, so write this area of HRL1 and area of HRL2. They were covering two different areas, area of HRL1 and the area of HRL2. Okay, right. HRL1 महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे. ठीक है, HRL1 का एरिया क्या है? महाराष्ट्र, बट हियर एक्सेप्ट बॉम्बे. व्हाई एक्सेप्ट बॉम्बे? बिकॉज इन बॉम्बे HRL2 वाज पॉपुलर. तो बॉम्बे का एरिया हो गया HRL2 के पास एंड रिमेनिंग महाराष्ट्र HRL1. ओके, HRL1 में फिर लिखिए some parts of central province, some parts of central province, some parts of Barar also, some parts of Karnataka region also. ठीक है, बरार एंड कर्नाटका रीजन. ठीक है, बॉम्बे के अलावा रिमेनिंग पार्ट्स मेनली साउथ इंडिया, मद्रास रीजन and some other areas. These areas were the areas that was covered by any Besant. ठीक है, so there were two leagues, home rule leagues having the same name. दोनों के नाम क्या थे? Same name थे. Now the next important question, Gandhi joined home rule league movement or not? This is an important question. Gandhi, so read this, Gandhi did not join. न तो HRL1 ज्वाइन किया गांधी ने, नहीं HRL2 ज्वाइन किया. Gandhi did not join HRL1, Gandhi did not join HRL2, Gandhi did not join HRL. Okay, now can you suggest me the reasons that why Gandhi would not have joined HRL1 और HRL2? गांधी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया होगा? So अभी डिस्कस करूंगा मैं HRL का ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम्स पे. Read this, Gandhi did not join. Why? The question is why. We all know the answer. Gandhi returned from South Africa to India in the year 1915. ठीक है, and what was the policy of Gandhi? गांधी की पॉलिसी क्या थी? First absorb, okay, first understand, okay, the causes, the underlying issues, and then react. So till now Gandhi was not well aware of the development of Indian politics and this was his strategy that पहले मैं क्या करूंगा? ठीक है, समझूंगा चीजों को, I will try to understand, then I will react. This is the most important point. So this is his policy. The second important point, who was Gandhi's political guru? You all know the name of political guru was Gopal Krishna Gokhale, and his guru has also instructed him. गुरु ने भी इंस्ट्रक्ट किया था, गोखले ने भी इंस्ट्रक्ट किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व देन रिएक्ट का इंडियन पॉलिटिक्स. राइट दिस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, फर्स्ट ऑब्जर्व देन रिएक्ट. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, फर्स्ट ऑब्जर्व देन रिएक्ट. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखो, during this HRL movement, Tilak raised a slogan. ठीक है, and what was the slogan? You all know this. That was a very popular slogan. The slogan was Swaraj is my birthright. ये सुना है ना आपने? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. स्वराज is my birthright and I shall have it. मैं इसे लेके रहूंगा.
Swaraj is my birthright and I shall have it. I shall have it. Swaraj is my birthright and I shall have it. This is the idea now. Gandhi की policy क्या थी? Gandhi is saying what? Gandhi said that when I listen this sentence, Swaraj is my birthright. और उसके बाद क्या है? I shall have it. ठीक है? तो टोन कैसा है? Which kind of tone? Swaraj is my birthright and I shall have it. ठीक है? तो गांधी ने कहा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हो रहा है. Swaraj is my birthright and I shall have it. Okay? So I shall have it. This is not giving an indication of a peaceful approach. ये peaceful approach को indicate नहीं कर रहा है. हालांकि मैं बार बार कह चुका हूं, गांधी वॉज अ वेरी क्लेवर स्टेट्समैन. बहुत ही चालाक राजनेता थे. एक बरगद के नीचे दूसरा बरगद कभी नहीं उग सकता. इसीलिए जिसको बरगद बनना है वो दूर कहीं जाके, ठीक है, आप बरगद बन सकते हो. ठीक है, गांधी वही बरगद थे. ठीक है, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट. गांधी इज सेइंग व्हाट? ओके, टोन. इसका टोन क्या है? ओके, टोन डज नॉट गिव द टोन डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीसफुल अप्रोच. ये पीसफुल अप्रोच को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. राइट, it is just indicating that it is indicating towards some kind of conflict वगैरह की बात करें. तिलक said that no ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं. गांधी मुझे ऐसा लग रहा है. और गांधी की लॉबी बहुत तगड़ी थी. आगे देखो गांधी कितने बड़े लॉबिस्ट हैं. राइट, सो दिस विल हैपन. ये एक मुद्दा है. एनी बेसेंट टाइम, ठीक है, कि गांधी बाबा हमारे होम रूल लीग को ज्वाइन कर लो. गांधी सेड दैट नो, दिस टाइम आई एम जस्ट ऑब्जॉर्बिंग. तो क्या इसमें ऑब्जॉर्व क्या करना है? वी आर फाइटिंग फॉर होम रूल, वी आर फाइटिंग फॉर द ओके होम रूल ऑफ इंडियन पीपल. इसमें क्या सीखना है आपको, क्या ऑब्जॉर्व करना है? गांधी ने कहा नहीं नहीं अभी मैं नहीं ज्वाइन करूंगा. हाँ, मेरा सपोर्ट है, इनडायरेक्ट सपोर्ट है, बट आई एम नॉट एक्टिवली ज्वाइनिंग इट. एनी बेसेंट सेड दैट वी आर फाइटिंग ओके फॉर अ होम रूल काइंड ऑफ गवर्नेंस. एनी बेसेंट सेड दैट ओके माई ऑब्जेक्टिव इज ओके, जैसे आयरलैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होम रूल दे रखा था. एनी बेसेंट आयरिश ओरिजिन, यू ऑल नो दिस. एनी बेसेंट ने कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर द सेम मॉडल. क्या आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और कंट्रीज में जो सेल्फ रूल का राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखा है, वी वांट द सेम राइट्स टू बी गिवन टू द इंडियन पीपल एंड दिस विल बी अ बेटर पॉलिटिकल रिलैक्सेशन गिवन टू द इंडियन पीपल. गांधी सेड दैट नो 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 अभी मैं नहीं ज्वाइन करूंगा. ठीक है, तो एनी बेसेंट को ये बात याद रह जाएगी. एंड व्हेन गांधी विल लॉन्च हिज फर्स्ट नेशनल सत्याग्रह, क्या था पहला नेशनल इशू, फर्स्ट नेशनल इशू दैट गांधी ओके क्या था पहला नेशनल इशू? रॉलेट सत्याग्रह ही तो था ना फर्स्ट नेशनल इशू. बिकॉज चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा वेर द रीजनल इशूज ना. तो पहला नेशनल मुद्दा जो था जिसको गांधी ने एड्रेस किया दैट वाज द रॉलेट सत्याग्रह. ठीक है, देन एनी बेसेंट सपोर्टेड रॉलेट सत्याग्रह और नॉट? व्हाट इज द आंसर? नो. एनी बेसेंट सेड दैट देयर इज नथिंग लाइक नथिंग, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू अपोज इन दिस राउलेट एक्ट, जबकि वो ब्लैक एक्ट था. बट स्टिल एनी बेसेंट सेड दैट मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा जिसका विरोध किया जा सके. तो इससे एक मैसेज मिला आपको. क्या मिला? बता चुका हूं पहले भी, नेवर से नो टू. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दिस कुछ लोग समझ नहीं पाए. जो समझदार है वो समझ गए. अच्छा, आकाश नहीं समझ पाए. गांधी सेड नो टू एनी बेसेंट. मैंने क्या कहा? नेवर से नो टू. नहीं समझ पाए. ठीक है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होम रूल लीग मूवमेंट. ऑब्जेक्टिव पहले लिख दिया ना. दिस विल माउंट अ प्रेशर. फॉर एग्जांपल, if during this first world war period if you will launch a movement, this will mount a pressure on the British government because they are already in difficult situation. So there is a greater probability that the British government might accept your demand. ये इसके पीछे विजन था. ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया वाज ओके दिस मूवमेंट टेंड्स टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द masses. It was a kind of, you can say that okay, educative propaganda. Right, we can use this word educative propaganda. Educative propaganda, it means what? Promoting
political awareness among the Indian masses. Among the Indian masses. Indian masses, ठीक है? Promoting political awareness among the Indian masses. Okay. And how this political awareness could be spread? Okay. So by opening libraries, ठीक है? और in libraries में क्या होगा? Nationalist literature. So the students will come, okay, and they will get motivated by this nationalist literatures, ठीक है? Pamphlets or articles will be there, okay? The second important point, okay, by conducting seminars and conferences, by conducting seminars and conferences, ये भी किया जा सकता था. By distributing pamphlets, by distributing pamphlets, by collecting funds, by collecting funds, by organizing lectures of the important leaders of the national movement, by organizing lectures of important leaders of national movement, by organizing lectures of the important leaders of the national movement. Okay, the idea was to promote political awareness among the Indian youth. And why political awareness? Because till this time, the demand for self-rule in India, till this time, the demand for self-rule in India was considered to be seditious. The demand for self-rule in India was considered to be the seditious. An act of sedition, इसको देशद्रोह माना जाता था. ठीक है, मतलब सेल्फ रूल का डिमांड अपनी ही कंट्री में क्या था? इट वाज एन एक्ट ऑफ सेडिशन. सो इफ पीपल विल बिकम अवेयर, ओके, दे विल से दैट देयर इज नथिंग सेडिशियस इन दिस डिमांड. जब आपको सेल्फ रूल का मतलब समझ में आएगा तभी आप कहोगे ना कि देयर इज नथिंग सेडिशियस इन दिस डिमांड फॉर होम रूल. तो यही ऑब्जेक्टिव था और काफी हद तक इस ऑब्जेक्टिव में हमें सफलता भी मिली. कैसे? ओके, बाय द प्रेशर माउंटेड बाय दिस एचआरएल मूवमेंट, finally the British government announced that the demand for home rule in India will not be considered seditious. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. ओके, so you can write this, that, okay, write this achievement, an important achievement, write this, an important achievement. Okay, as a result of pressure mounted by home rule league movement, HRL movement, as a result of pressure mounted by HRL movement, as a result of pressure mounted by HRL movement, British government finally announced that the demand for self-rule will no longer be considered as seditious. Okay, the demand for self-rule will no longer be considered as seditious. Okay, demand for self rule will no longer be considered as seditious. मेरी बात समझ गया ना? तो was this movement successful in mobilizing public opinion or not? Yes. Was this movement successful in increasing the level of political consciousness of the masses? Yes. Okay, so write this point that it was also successful in mobilizing public opinion. This movement was also successful in mobilizing public opinion. This movement was also successful in increasing the level of political consciousness in the minds of people. This movement was also successful in increasing the level of political consciousness in the minds of these people. Got it? This is the entire idea. And the method which they are using it what? Peaceful method. Constitutional means. ठीक है, write this. The method was peaceful. Constitutional, moderate method. The method was peaceful, constitutional and moderate method. Method क्या था? It was peaceful, it was constitutional and it was moderate method. ठीक है ना? क्योंकि lectures organize करना, ठीक है, libraries open करना, ये सब किस में आता है? Peaceful, moderate method में ही आता है. इसके बाद क्या होता है? देखो 1618. What is the objective of this movement? Ultimate objective क्या है? Home rule for India. This objective was achieved as a result of this movement or not? The answer is no. हमें सफलता मिली होम रूल का मुद्दा ब्रिटिश सरकार से मनवाने में? The answer is no. So this objective, it's true that
this objective could not be achieved. It's true that this objective could not be achieved, ठीक है, but still it was significant. Now you all know that why it was significant, but still it was significant. Got it? But still, नहीं नहीं, उसके पहले का है, बिफोर दिस, ठीक है ना? पहले रिलीज कर दिया गया था एक्चुअली, ठीक है, उनको। देन ही केम एंड द टोन वाज चेंज्ड, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। हैव यू गॉट दिस आइडिया? देखो क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हुए। हमें होम रूल नहीं मिला, ये सीधी सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रिविलेज हमें नहीं दी। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा? सबसे इंपॉर्टेंट पहला, द डिमांड फॉर होम रूल विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज सेडिशियस। दूसरा, ठीक है, माउंटेड प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वी विल सून लॉन्च अ न्यू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वी विल सून लॉन्च अ न्यू सेट ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, एंड दीज न्यू सेट ऑफ रिफॉर्म्स विल एड्रेस all pending political demands of Indian people, all pending political demands of Indian people। कहा ये जो नया set of reform होगा, this will be able to address all pending political demands of Indian people। और किस रिफॉर्म का वादा कर रहा है ये? गेस करो। एक्ट ऑफ 1919। ये ईयर क्या है? 1916 टू 18। जैसे याद करो, स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, वहां वो प्रॉमिस कर रहे थे किसके बारे में? एक्ट ऑफ 1909। सो हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड फॉर that this Montagu-Chelmsford reforms, that is also known as Act of 1919, ये इसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, Montagu-Chelmsford reforms को, कि we will be bringing this Montagu-Chelmsford reforms and all your pending political demands will be, okay, addressed। Got it? So is this movement a failed movement? No, this movement cannot be said that failed movement, ठीक है। इसने क्या किया? लोगों के पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को, और हम कह सकते हैं कि इट प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। व्हाट वर द लिमिटेशंस? नाउ यू ऑल कैन गेस दोज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या था? कैन यू सजेस्ट मी सम पॉइंट्स? लिमिटेशंस, हाँ, that is important point, but when you will prioritize the point, the most serious limitation is what? पहली चीज, one movement, sorry, two parallel movements with the same name with the same objective, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था। मेरी बात समझ गए ना? इससे कंफ्यूजन होगा लोगों में। टू पैरेलल मूवमेंट्स विद द सेम नेम विद द सेम ऑब्जेक्टिव। नाउ जस्ट इमेजिन कि दोनों अगर एक होता, सो द एफर्ट्स शुड बी मोर कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट, ओके। तो ये पहला सीरियस लिमिटेशन है। फर्स्ट सीरियस लिमिटेशन इज व्हाट? टू पैरेलल मूवमेंट्स, two parallel movements by the same name and by the same objective। केवल डिफर क्या है? एरियाज एंड द फाउंडर, यही तो डिफर कर रहे हैं। टू पैरेलल मूवमेंट्स विद द सेम नेम with the same objective, only areas are different, founders are different, time period is also the same, so this will create a confusion among the masses। ये लोगों के अंदर क्या पैदा करेगा? एक तरह का confusion। this will create a confusion among the masses। got it? This is a serious limitation। and the second important limitation that Akash recently suggested क्या था? कि confined, it was confined mainly to the urban areas and among the urban people, right? Second serious limitation, confined mainly to the urban areas among the urban masses, okay। तो it was not based on the idea of mass based politics like Gandhi, वैसा नहीं था। it was confined mainly to the urban areas, confined mainly to the urban areas, ठीक है। got it? now the next and most important point is what? ठीक है, कि yes, there was a moderate extremist reunion in 1916, but still
देयर वर मेनी डिफरेंसेस, ठीक है, अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो रहे थे। गांधी को कहाँ रखोगे आप? गांधी कह रहे यार स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, तो जब मैं सुन रहा हूँ आई शैल हैव इट, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये क्या दिखला रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो राइट दिस पॉइंट दैट स्टिल देयर वर सम डिफरेंसेस in political understanding of moderates and extremists, and that was also a limitation. Some differences in the political understanding of moderates and extremists. दोनों साथ आ गए थे कुछ मुद्दों को लेके, but still, okay, that is one part. Got it? Now, lastly, one important fact, and that is, देखो, gradually HRL1 and HRL2 sudden decline होगा कि gradual decline? The answer is gradual decline. ये अप्रोच आपको पता है ना, ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी कम हो गया, लाइक स्वदेशी मूवमेंट। पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन द ईयर 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। नाउ ब्रिटिश कुड फोकस मोर हियर, अब वो यहाँ ज्यादा ध्यान दे सकते थे, ठीक है। तो ये एक रीजन हुआ कि नाउ ब्रिटिश विल फ्री, प्रीवियसली दे वर एंगेज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा पॉइंट क्या है कि एनी बेसेंट नाउ वाज अ मोर पॉपुलर लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, उसमें बिजी हो गई, होम रूल लीग मूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इट मीन्स दैट द अटेंशन और द फोकस ऑफ एनी बेसेंट वॉज डाइवर्टेड लेटर, ठीक है। अगर उसी का एनी बेसेंट का ये अटेंशन और फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी वन लिमिटेशन, एज अटेंशन और फोकस ऑफ एनी बेसेंट विल बी डाइवर्टेड, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखो, द नेक्स्ट फाउंडर वॉज तिलक, तिलक है ना अगले फाउंडर, ओके। नाउ Valentine Shirol. Have you heard this name? Valentine Shirol. This is an important question. PYQ. Valentine Shirol termed Tilak as the father of India's unrest. ठीक है. Valentine Shirol, narrate this. Valentine Shirol. Valentine Shirol. ठीक है. ठीक है. Called Tilak or addressed Tilak as the father of India's unrest. इसने ये कह दिया, ठीक है, that Tilak फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, यानी हिंदुस्तान में जो भी उथल पुथल हो रहा है इसकी वजह कौन है? तिलक। तिलक एज द फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल सेड इट दैट तिलक इज द फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। गॉट इट? और ये बात जो है फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल, व्हेन ही सेड, ओके, सो तिलक विल डू व्हाट? तिलक विल गो टू ब्रिटेन, लंदन to file a defamation suit against वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। यानी यहां पे आपका फोकस और अटेंशन क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। मेरी बात समझ गया ना? ओके, सो वी कैन से दैट द फोकस और अटेंशन ऑफ तिलक वाज आल्सो डाइवर्टेड। सो राइट दिस, फोकस एंड अटेंशन ऑफ तिलक वाज आल्सो डाइवर्टेड। गॉट इट? समझ पाए होगे आप, ठीक है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। कई सारे आर्टिकल्स में उसने लिखा था, टाइम्स ऑफ लंदन में लिखा था फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट, फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। नाउ दिस इज होम रूल लीग मूवमेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड होम रूल लीग मूवमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड to the next topic. Now the next topic that we are going to discuss is Gandhi, ठीक है, गांधी पे डिस्कस करना है अभी। This is the next important topic that we have to discuss. This is Gandhi, and there are so many ideas that we have to discuss in Gandhi. This topic is very important. It's not only important for history, but it is equally important for other areas of GS. Particularly, this will also be helpful in your essay paper. That's why we will discuss this topic in totality, right? In totality, we are going to discuss this topic in totality. Now, what are the different dimensions that we need to cover in this chapter, Gandhi? So first,
we need to understand, okay, Gandhi's, right, journey of life, journey of life, how his journey of life started, how the childhood experiences of Gandhi, okay, were helpful in shaping his thoughts and behavior. That is also very much important because our family, our surroundings have a profound impact on our lives. So this we need to understand that the family and the surroundings, they have a profound impact on the life of any individual. So we need to understand that, okay, what are the influences of family and surroundings on the personality of Gandhi? That is one idea. The second important point is Gandhi's political journey. This is the second important part, Gandhi's political journey, and this we need to understand. So his political journey started from India or South Africa. So his political journey started from South Africa. And by providing leadership in South Africa, Gandhi emerged as an international leader. गांधी यहाँ पे क्या बन गए? International leader. And then he came to India, and in India he became national leader. So he's first such leader who was first international leader. अच्छा, national leader बनने के पहले इंडिया में गांधी was a regional leader. He addressed some regional issues. So journey is like this. First he was an international leader. Then he addressed some regional issues in India like Champaran, Ahmedabad and Kheda. And then he entered into the national politics by Rowlatt Satyagraha, Khilafat movement, non-cooperation movement, okay, and all this. Clear? So Gandhi's political journey is also very much interesting. And Gandhi was a skilled statesman. ठीक है, बहुत मंजे हुए नेता थे, skilled statesman. So obviously a skilled statesman will have some political ideas of his own, some thoughts of his own. Now we need to understand that what are Gandhi's political thoughts? Clear? Were these thoughts the original thoughts of Gandhi, or was Gandhi influenced by some other thinkers? This we need to understand. That political ideas and thoughts of Gandhi, and what are the influences on Gandhi's political thoughts? वो influences क्या है? And this part, from this part also UPSC has asked question in prelims. Mains के लिए तो important है ये, but prelims में भी पूछा है. That what are the political influences on Gandhi? This we need to understand. His journey in South Africa, his journey in India, how it all started. This we'll discuss. Okay, and one by one we will also discuss all the movements that Gandhi provided his leadership. Okay, so in this way we are going to cover this topic. Right now, let's start with the beginning. Okay, Gandhi's journey of life. Gandhi's journey of life. Gandhi's journey of life. How it all started. So when you look at the childhood experiences of Gandhi, you will find that childhood experiences of Gandhi. Okay. So one thing that we find is very common because Gandhi has wrote, okay, his autobiography also, My Experiments with Truth. That Gandhi himself writes that he was a very average student. पहली चीज, ठीक है? He was introvert also. He was introvert also. He was average. He was introvert. And when he was in school, he was also fearing from other students कि कहीं बुलिंग के शिकार ना हो जाए. ठीक है, मेरी बात समझिए ना. क्लास में कुछ बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं, तो ये भी था. एंड गांधी वाज आल्सो वेरी fearful person. He was fearing from the ghosts, fearing from the snakes. ये तरह तरह की कहानियां सुन रखी थी, उनको डर भी लगता रहता था. ठीक है, सो ये सारी खूबियां थी गांधी में. ठीक है, गांधी खुद लिखते हैं कि आई वॉज अ वेरी एवरेज पर्सन. ओके, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. ओके, आई डिड नॉट लाइक टू मिक्स अप विद द पीपल, एंड ही नेवर इंटेंडेड टू बिकम अ लॉयर. लॉयर बनना उनका सपना नहीं था. ये सपना किसका था? उनके पेरेंट्स का सपना था. राइट?
सो ही नेवर इंटेंडेड टू बिकम लॉयर, वो लॉयर भी नहीं बनना चाहते थे, बट यस हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनका इंसिस्टेंस था कि गांधी को लॉयर बनना चाहिए। अब बताओ एक इंट्रोवर्ट पर्सन अगर लॉयर बन जाए तो क्या होगा? दुकानदारी चलेगी? नहीं, राइट? व्हाट विल हैपन व्हेन अ इंट्रोवर्ट पर्सन विल बिकम लॉयर? तो गांधी इंट्रोवर्ट थे और आगे जाके लॉयर बने भी, ठीक है, बट हिज कैरियर, ही वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल इन हिज कैरियर। लंदन से पढ़ के भी आए, बट ही वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल इन हिज लीगल कैरियर, ठीक है, लीगल करियर में सक्सेसफुल नहीं थे। और दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल, उनका लीगल करियर बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल वाज नॉट इंट्रोवर्ट, ठीक है। ऑन 31st अक्टूबर आई विल रिलीज अ वीडियो ऑन वल्लभ भाई पटेल, तो होपफुली वो 4 या 5 आवर्स की वीडियो होगी, तो आई विल रिलेट एवरीथिंग इन वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भेजूंगा लिंक उसको, तो अपनी सुविधा से आप लोग ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। So here, lawyer and everything. Now there are some interesting stories I would like to share with you. First story, okay, Gandhi and his brother. We all know that Mohandas Karamchand Gandhi, basically Karamchand, his father, okay, uh, had 3 marriages. ठीक है ना? First marriage, wife died. Second marriage, okay, there was a girl child, there was no male child. Then he expressed his desire, okay, for a third marriage. तो सेकंड मदर जो थी गांधी की, उन्होंने कहा कि यार इस उम्र में आप थर्ड मैरिज करोगे, कोई लड़की तुमसे शादी करेगी? गांधी के फादर ने कहा मेरा टैलेंट पता नहीं, 24 घंटे के अंदर मैं शादी करके दिखाऊंगा, एंड देन ही मैरिड, ठीक है। तो तो पुतली भाई वी ऑल नो, ओके, सो ही वाज मैरिड, एंड देन फ्रॉम द थर्ड वाइफ गांधी वाज बोर्न, ठीक है। तो गांधी के एक भाई भी थे। तो गांधी लिखते हैं कि देयर वर सो मेनी ओकेजन्स, ओके, वेयर माय ब्रदर आस्क्ड मी दैट आई एम फेसिंग सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और कुछ पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत क्यों है? चाइल्डहुड में पता ही है आपको, कुछ उल्टी सीधी लत लग जाती है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो गांधी ने सजेस्ट किया अपने भाई को, कहा कि भाई देखो, अ, कुछ ज्वेलरी है जो आप यूज़ कर सकते हो, करते हो, तो उसको सुनार को दो, ठीक है, और वो क्या कर देगा, उसको थोड़ा हल्का कर देगा और आपको कुछ पैसा दे देगा, या घर की कुछ चीज़ें उठा के आप बेच भी सकते हो, और इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी विचार किसके थे? गांधी के थे। गांधी हिमसेल्फ राइट्स दैट आई सजेस्टेड, ओके, सच आइडियाज टू माय एल्डर ब्रदर, ओके। फाइनली उस पे एक्ट भी किया इन्होंने, बट स्टिल, ओके, you can say that he at many times, okay, he thought that this is not a good idea, it is like stealing. तो एक बार उन्होंने अपने फादर से ये सारी बात जाके बताई कि ये गलती मैंने की है, बट उनके फादर ने उनको डांटा फटकारा नहीं, ठीक है। और his father started weeping when Gandhi shared that what are the mistakes that I have committed. In a letter he wrote and gave it to father, and his father started weeping. And Gandhi writes that, okay, the tears coming out from the eyes of my father changed me completely. बहुत बड़ी बात है, पेरेंटिंग की बात है। अगर गांधी के पापा ने, मोहनदास के पापा ने उनकी पिटाई करी होती तो गांधी कभी नहीं बदलते, ठीक है। तो उन्होंने पिटाई नहीं की, ठीक है, बट इनकी गलतियों से इनके पिताजी कितना दुखी हुए, ये देख के फिर गांधी ने डिसाइड किया कि आगे समझे ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीजें अपनी माँ से सीखा इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल लव फॉर नेचर, ओके, दिस ही लर्न फ्रॉम हिज मदर, ओके। वेजिटेरियनिज्म, दिस ही लर्न फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। वैष्णविज्म, दिस ही लर्न फ्रॉम हिज मदर, ओके, मदर वॉज अ वेरी रिलीजियस वुमेन। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने घर में सीखी, ठीक है ना। जैसे गांधी इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, वो रामराज्य की बात करते हैं, ओके, इन नेशनल मूवमेंट। आई विल डिस्कस विद यू व्हाट वाज द आइडिया ऑफ रामराज्य। सो ऑल दीज आइडियाज, ओके, ही गॉट फ्रॉम हिज फैमिली इटसेल्फ। बहुत सारी चीजें इन्होंने फैमिली से सीखी, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल लाइफ, तो पॉलिटिकल लाइफ में देखो, ये जर्नी वाला पोर्शन रहने देते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, टाइम बहुत लग जाएगा, मैं एंटर नहीं करना चाहता। पॉलिटिकल लाइफ में एंटर करते हैं। राइट दिस पॉलिटिकल लाइफ, गांधीज जर्नी, गांधीज जर्नी, पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ओके। गांधी साउथ गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। ईयर, लाइफ जर्नी,
उस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट वो एडिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो बहुत लंबी वीडियो थी, उसका एक पार्ट मैंने शेयर किया था, ठीक है। लगभग 18 वीडियोज हैं, वो एडिट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो पॉलिटिकल लाइफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखो 1893, राइट दिस 1893 एंड हियर राइट 1950, ठीक है। 1893 एंड 1950, गांधी's political journey 1893 एंड 1950, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका, गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका गांधी क्यों गए, ये बात आप सबको पता है, ओके। द कॉन्टेक्स्ट इज ही गॉट अ लीगल केस मिला इनको, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, ठीक है। इन्हीं के लीगल केस को देखने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। बेसिकली द लीगल करियर ऑफ गांधी इन इंडिया वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, ठीक है। ही हिमसेल्फ राइट्स, ठीक है, कि मेरा लीगल करियर सक्सेसफुल नहीं, ठीक है। एंड व्हेन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ओके, टू लुक आफ्टर केस ऑफ दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, ओके, सो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। दिस वाज लाइक अ अपॉर्चुनिटी फॉर गांधी, ये गांधी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड आफ्टर दिस व्हेन गांधी रीच्ड इन साउथ अफ्रीका, okay, South Africa was a colony of Britain. You all know this. It was a colony of Britain. In the same way, like India was a colony of Britain. India was also a colony of Britain. South Africa was also a colony of Britain. Okay. And when he reached South Africa, what he sees is that, okay, colonial discrimination in South Africa was done. Colonial discrimination. Colonial discrimination. What are the important colonial discriminations that he experienced in South Africa? One is racial discrimination, okay. The idea of racial superiority was promoted, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट भेदभाव था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इट वाज इन इंडिया आल्सो, इंडिया में भी था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। नाउ why this racial discrimination is important and how Gandhi was affected by this we need to understand. So there was a case of, read this, indentured laborers, indentured laborers, indentured laborers, and read this, there are two important, okay, legislations that are related to these indentured laborers. First is, right, disfranchisement bill, disfranchisement bill, ठीक है। इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल के बारे में। द फर्स्ट इज डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल एंड द सेकंड इज ओके, राइट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट और ब्लैक एक्ट। सेकंड इज एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट और ब्लैक एक्ट 1906। तो पहले ये 3 इश्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन आई विल एंटर इनटू द स्टोरी, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है ना। इंडेंचर्ड डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इससे आप बेहतर समझ पाओगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। देन आई विल एंटर द स्टोरी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो देखो, आई हैव यूज्ड हियर अ वर्ड दैट इज इंडेंचर्ड लेबरर्स, इंडेंचर्ड लेबरर्स, ठीक है। There is another word that is used for the same, and that is girmitia. Girmitia. Many standard books use this word. This was a very popular word. Girmitia. Girmitia. What is this word girmitia? देखो, there is a word agreement. Agreement. And the corrupted form of this word agreement is girmit. जैसे गांव का आदमी, a common villager, rickshaw puller, he will not, if he will not be able to pronounce agreement, what he will say? गिरमिट, ठीक है, ठीक है। जैसे एक मूवी है लायन, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देखा भी होगा आपने।
नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पे है, तो उसको कुछ दिनों पहले मैंने देखा। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो, हाँ देखा देखा आपने आकाश, बहुत शानदार मूवी है। उसका नाम है सरू। लास्ट में उसको पता चलता है कि वो नाम सरू नहीं है, वो नाम क्या है कैरेक्टर का, शेरू। ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट इन दिस एंटायर फिल्म। ठीक है, कि उसका नाम शरू नहीं था, क्या था, शेरू था। बट गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिकॉज मदर वाज ओके, जस्ट यू कैन से दैट वर्कर। तो वो उसको क्या प्रोनाउंस करती थी, सरू, शेरू को। इन द सेम वे हियर व्हाट वी सी दैट एग्रीमेंट वर्ड वाज प्रोनाउंस्ड एज गिरमिट। ठीक है। तो देखो क्या था, व्हाट हैपेंड इन इंडिया। इन इंडिया देखो, there was a charter, that is Charter Act of 1833. Charter Act of 1833. Write this. This is a very important glimpse fact. Charter Act of 1833. And in this Charter Act, right, this British government, okay, right, British government expressed its commitment, expressed its commitment for the abolition of slavery in India. Abolition of slavery in India. Charter Act of 1833. British government expressed its commitment for the abolition of slavery in India. किसकी बात करी, abolition of slavery in India, Charter Act 1833। यहां पे दो फैक्ट्स हैं, याद रखना। दूसरा 1843, right, slavery in India was abolished by law. Slavery in India was abolished by law. While reading question in prelims, be careful. फर्स्ट टाइम कब कहा गया कि स्लेवरी इन इंडिया विल बी अबॉलिश्ड, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें कहा गया। बट फाइनली व्हेन स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन इंडिया, इन विच ईयर, 1843। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 1843। बट देखो, द स्लेवरी इन इंडिया एंड द स्लेवरी इन यूरोपियन कंट्रीज, द नेचर ऑफ द स्लेवरी वाज डिफरेंट। ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 12 इयर्स अ स्लेव, उसमें जैसा स्लेव के साथ ट्रीटमेंट होता है, क्या इंडिया में कभी भी वैसे ट्रीटमेंट हुआ है? नहीं। देयर वाज अनटचेबिलिटी, बट स्टिल द नेचर ऑफ स्लेवरी इन इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ स्लेवरी दैट वाज इन other countries of Europe. For example, in India, okay, the people had loyal servants. They were not slaves. Loyal servants means what? The master will take care of all the responsibilities of the family, or you can say that marriage of the children, and these servants will work for the master, okay, without taking salary. वो सैलरी नहीं लेते थे, बट दे वर वर्किंग फॉर देयर मास्टर्स। बट मास्टर्स पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। मेरी बात समझ गया ना? और अगर आप सैलरी के हिसाब से काउंट करोगे तो सैलरी से ज्यादा हो जाए। ठीक है। कि if there is any disease, if there is marriage in the family, लोग अपनी जमीन भी दे देते थे। they used to give land to, okay, for construction and all this। जिसके पास ज्यादा फार्म्स हैं वो कुछ फार्म्स भी डोनेट कर देता था। तो this was like that, and British were surprised to see this in India. They were saying that are you getting salary? The loyal servant says no, I don't get salary. तो अंग्रेजों ने इसी को समझ लिया कि ये क्या है, स्लेवरी। ठीक है। तो उन्होंने कहा we will do what? We will abolish slavery. Finally, they abolished slavery by legislation. In which year? Through legislation, they abolished it in 1843. And now, देखो मैंने कहा ना, कॉलोनीज में जो भी पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होगा, और वो क्या होगा, पेरेंट कंट्री को उसका लाभ पहुंचाना, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर द पेरेंट कंट्री। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, देखो 1843 is the year. After this, what we see that in South Africa, right, this, there were plantation activities. South Africa में there were plantation activities. Clear? And in these plantations activities, there were sugar plantations, okay, and other plantations, tea plantations, coffee plantations, इस तरह की plantation activities थी। And here, this is what labor intensive industry. This is what a labor
intensive industry. And the plantation owners were British people. The plantation owners were British people. Okay, this is the labor intensive industry. Clear? So here the Europeans, okay, they realized the for laborers लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में क्या चाहिए? आपको वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए इन इंडस्ट्रीज में. तो वो लेबरर्स कहां से लाएंगे? ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे विल डू व्हाट. ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा. 1843 में इंडिया में आ जाओ. स्लेवरी abolished by law. Slavery is abolished by law. And what will happen then? 1850s, 1860s, 1860s. What will happen? Now, the European planters here, the British planters here, will talk with the British Indian government and they will ask the government that ये दोनों के बीच में आपसी समझ है, mutual understanding. The British Indian government will say that we are creating employment opportunities for the Indian people. And which kind of employment opportunities are being created here? देखते रहो. जैसे 1858 में क्या हुआ है याद करो. 1858 क्राउन रूल. 1858 क्राउन रूल इन इंडिया. क्राउन रूल ने क्या कहा? वी विल ट्रीट इंडियन पीपल लाइक द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. तो रोजगार भी देंगे ना, नौकरी भी देंगे. नौकरी कहां देंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? नाउ इंडियंस ओके कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स with the European planters in South Africa. ठीक है? And this contract, this agreement, or you can say that this indenture, contract, agreement, or indenture. I am writing this word contract. I am writing this word agreement, or I am writing this word indenture. All have the same meaning. ठीक है? Contract, agreement, indenture. This will be signed for how many years? 5 years. 5 साल के लिए साइन होगा. ठीक है? Suppose we all are the laborers in India. So we can sign an agreement with the British planter for a period of 5 years. ठीक है? That we will go to South Africa to work in plantation. And once 5 years is completed, after the expiry of 5 years, okay, we are free to return to our own country. हम अपने देश में वापस आ सकते हैं. Second option. If we want to settle in South Africa, we can be settled there also. हम वहां भी settle हो सकते हैं. And we can get the right to purchase land. We can get the right to do business there. We can get the right to vote there. So all these rights will be given to the Indian people. If they want to come back to their country, it's okay. If they want to stay in South Africa after an expiry of 5 years, what will happen? You will be given the right to franchise. And here franchise means what? Right to vote, right to purchase land, right to do business. तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रेंचाइज. आपको राइट मिल जाएगा. सो राइट दिस पॉइंट दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years and after the period of after the expiry of 5 years, right, after the expiry of 5 years, the Indian laborers will be given option. The Indian laborers will be given option. Indian laborers will be given option under the choice. What is choice number 1? Okay, they can come back to India if they desire. They can come back to India if they desire. That is choice number 1. They can come back to India if they desire. And what is choice number 2? Right, choice number 2. Okay, if they want to stay in South Africa, they can do so. If they want to stay in South Africa, they can do so. They will be allowed to settle. They will be allowed to purchase land, or they will be allowed to get ownership of the land. They will be allowed to purchase land. They will, okay, they can start their businesses. ठीक है? They can get ownership rights. They can get right to vote. It means इसी right को हम क्या कहते हैं? Franchise. Franchise. This is the meaning of franchise. ठीक है? This is the meaning of franchise. ये मुद्दा था. Now Indian people will do what? अब उनको क्या लग रहा है कि यार हमें मंथली सैलरी मिलेगी. ये एक रीजन था जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करी थी.
क्योंकि उनको रेगुलर सैलरी मिल रही थी। यहाँ पे क्या मिल रहा है? रेगुलर सैलरी मिल रहा है, प्लस आप चाहो तो वहां सेटल भी हो सकते हो। सो द पीपल विल गो टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लोग जाएंगे बड़ी संख्या में टू वर्क इन प्लांटेशंस। दे विल गो टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, टू वर्क इन प्लांटेशंस। एंड इन साउथ अफ्रीका द प्लांटेशन ओनर्स will do what? Will exploit the Indian origin indentured laborers. They will exploit the Indian origin indentured laborers. Clear? बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ये बड़ा क्रूड फॉर्म में लिखा गया है कि which kind of exploitation was done. ठीक है? The young wives, the young sisters or the daughters, okay, were often exploited by these plantation owners. ये तो पहला exploitation है, ठीक है? ये exploitation होता था. Young wives, sisters and daughters of the plantation workers were exploited by the plantation owners. This is the first kind of exploitation. Plus, there were many other exploitation that plantation owners will consider themselves as what? Superior. वो अपने आप को क्या समझेंगे? Superior रख के समझेंगे. Okay. Anyhow, what will happen? The laborers will go to South Africa. They will start working in those plantations. Okay. After some time, what will happen? When their agreement tenure is over, what they will do? Many of them will choose to settle in South Africa. वहां settle हो जाना चाहेंगे. And when they will settle in South Africa, what will happen? The Indian people, okay, they were very laborious. They will purchase land. ठीक है, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? They will start their businesses, and very soon, this class of indentured laborers, some of them will become the popular entrepreneurs in South Africa. वो बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे. They will start purchasing mango farms. They will start doing trade and commerce. They are owners of land. They have a lot of money. वो अपनी मेहनत से उसमें एक क्लास ऐसा होगा जो इंटरप्रेनर बन जाएगा. नाउ दिस विल गिव अ टफ कंपटीशन टू ब्रिटिश. अगर आप बिजनेसमैन बन जाओगे तो किसको कंपटीशन दोगे बताओ? दिस विल गिव टफ कंपटीशन टू ब्रिटिश. ठीक है. नाउ हियर व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम the Indians started giving tough competition in business to British people. ठीक है. प्रोसेस कब से शुरू हुआ था? 1816 से. देखते रहो. 1816 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था. Indians 1843 में slavery was abolished by law. 1858 crown rule was restored in India. 1860s the process of migration to South Africa started, and within these 3 decades of time, within these 3 decades, the Indian origin people started giving tough competition to British. तो ब्रिटिश तो जानते ही हो, हमेशा उनके unfair rules होते हैं. So now, in order to eliminate competition, what the British government will do here in South Africa? Read this: disfranchisement bill. Disfranchisement bill. Disfranchisement bill. 1894. 1894 will be introduced. Disfranchisement bill 1894 will be introduced. Disfranchisement bill 1894 will be introduced. अब देखो दो वर्ड्स है यहाँ. एक वर्ड क्या हो गया? फ्रेंचाइज. दूसरा वर्ड में क्या लिख रहा हूं? डिसफ्रेंचाइजमेंट. डिसफ्रेंचाइजमेंट. देयर आर टू वर्ड्स ना. तो बताओ एग्रीमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ था? फ्रेंचाइज. Means once the tenure of 5 years is completed, you will be given the official permission to settle, official permission to do trade and commerce. Okay, you can purchase land, you can do business. यही था ना? Right to vote, सब इसका हिस्सा होगा. Now what British government is doing? Changing the rules. और rule क्या है? Disfranchisement. It means what? These rights will not be given to Indian people. Okay, or serious restrictions over these rights will be imposed. So write this disfranchisement bill. What is the objective? Right, putting restrictions on the rights to franchise rights, putting restriction on the rights of Indian origin people. Okay, putting restrictions on the rights of Indian origin people. इसका मतलब इनके rights क्या किए जाएंगे? ले लिए जाएंगे.
क्या किया जाएगा इनको? डिसफ्रेंचाइजमेंट का मतलब यू आर कंपेल्ड टू लिव इन गेटोस। गेटोस जानते हो? गेटवाइजेशन, ठीक है, सेपरेट हैबिटेशंस, अलग आपका हैबिटेशन होगा। बहुत सारे बिजनेसेस में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यू विल बी नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू क्लब्स एंड यू कैन से दैट वेरी बिग रेस्टोरेंट्स, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। अच्छा बताओ, फिर आप कैसे बड़े बिजनेसमैन रह जाओगे? ये अगर आपके पास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कि आप क्लब्स में नहीं जा सकते, चाहे जितना पैसा हो आपके पास, डज नॉट मैटर। आप फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते, इट डज नॉट मैटर हाउ मच रिच यू आर, ठीक है। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरह की मेंटालिटी को प्रमोट किया जाएगा। एंड व्हाट इज द मेन रीजन हियर? मेन रीजन क्या है? कि डिस्करेज करना, किसको? इंडियन बिजनेस क्लास को। मेरी बात समझ गया ना? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इंडियन बिजनेस क्लास को क्या करना था? डिस्करेज करना था। इससे बताओ, जो इंडियन कम्युनिटी या जो इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं, जो वहां जाके बिजनेसमैन बन गए हैं, विल दे बी डिससेटिस्फाइड? यस। तो एक बात मैं कहता हूं कि गांधी बनने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप किस समय कहां हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गांधी रीच टू साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? गांधी कब गए? 1893। गांधी साउथ अफ्रीका में इतने पॉपुलर लीडर कैसे बन गए? 1894। क्या हुआ? विच बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड? डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और लोगों के अंदर गुस्सा था। इसी बीच इसके पहले की घटना है, गांधी वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें एक अंग्रेज मिल गया गांधी को, कहा इधर कहाँ आ गए भाई? गांधी सेड दैट आई हैव परचेज द टिकट। का टिकट वेट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी जो पहला स्टेशन आ रहा है यहीं उतर जाओ तुम। फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। गांधी वॉज वेरी हर्ट, ठीक है ना। देन व्हाट गांधी डिड व्हेन ही रिटर्न्ड होम? ओके, ही डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज डन विथ मी। नाउ द अदर पीपल विल से दैट इसमें नया क्या है, हमारे साथ तो रोज ही होता है। गांधी विल से दैट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नाउ गांधी इज डूइंग व्हाट? Gandhi started giving leadership to the discontent of the masses, and very soon the British government introduced which bill? Disfranchisement bill. And then Gandhi rapidly started gaining support of the Indian people. They rallied behind him. और उनके पीछे जो लोग इकट्ठे हुए, उनमें बिजनेसमैन क्लास था कि नहीं था? Yes. So this businessman class will give what? Funds or donations. And funds or donations are very much important for any movement. किसी भी मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है? फंड इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवमेंट के लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डोनेशंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज गांधी, राइट। सो गांधी also learned the art of raising funds in South Africa, ठीक है। Building good relations with the business class, capitalist class. गांधी learned this in South Africa. गांधी ने इस बात को भी सीखा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इंडेंचर्ड लेबरर्स को गिरमिटिया क्यों कहते हैं? बिकॉज इंडेंचर मीन्स एग्रीमेंट, बट द कॉमन विलेजर a layman might pronounce it like गिरमिट, ठीक है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट? गिरमिटिया। मेरी बात समझ गए? सो दिस विल हैपन हियर, एंड नाउ गांधी becomes the symbol of resistance in South Africa. Okay, so Gandhi was at the right place, right time, okay, and the decision of Gandhi was right, okay, to become a symbol or voice of the, okay, you can say that, discontent of the masses. Okay, now in next class I will discuss with you the Asiatic Registration Act and the other forms of discrimination that Gandhi, okay, opposed in South Africa. देखो क्या है, ये पूरी स्टोरी इतनी लंबी मैं इसलिए बताता हूं ना, देयर इज अ रीजन, कि अब आपको डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल 1894 आप भूलोगे नहीं। भूलोगे क्या? प्लस उसको आप जहां चाहो जैसे चाहो यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ गया ना? सो फॉर दैट रीजन आई यूज टू नरेट स्टोरी। हिस्ट्री इज व्हाट? स्टोरी। और क्या है? ओके, इफ यू आर सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ योर पास्ट, यू विल ऑलवेज हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ये हमारी एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में भी है। इफ यू आर सक्सेसफुल इन रियल गेटिंग a good idea of whatever the mistakes that you have committed previously, you can make a good strategy for the
फ्यूचर। तो कभी भी फ्यूचर में अच्छा होने के लिए हमें पास्ट के डॉट्स को बेहतर ढंग से कनेक्ट करना आना चाहिए। गॉट इट? सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस। ओके, हमें नहीं पता ना कि अभी क्लास में बैठा हुआ कोई लड़का या कोई लड़की, एनी स्टूडेंट माइट बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, ठीक है। बट वट एवर यू आर लर्निंग हियर, दिस विल हेल्प यू अ लिटिल बिट, कहीं ना कहीं आपके आइडियाज को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चीजों को समझना हमें जरूरी है। मेरी बात समझ गया? सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ऑल द इश्यूज, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। और गांधी की पर्सनल लाइफ वाले पे मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो शायद कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा डिटेल, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ फादर, मदर, वाइफ, सराउंडिंग्स, इन्फ्लुएंसेस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन्फ्लुएंसेस ऑफ भगवत गीता, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस, ठीक है ना। बट आई विल डिस्कस दैट, वो आपके साथ किसी वीडियो में कर लूंगा या ऐसे करूंगा, तो वो हेल्पफुल होगा। गॉट इट? ओके, चलिए फिर, कोई क्वेश्चन है? हैव एनी क्वेश्चन? नो? ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।